Before we start, make sure you are subscribed and you must press the bell icon. Cheers, bro. Cheers to life. Yes to good life. Cheers to good life, yes. Right नहीं, लोकेशन कौन सी है? जिब्बी 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 है ब्रो, जिब्बी होना नहीं होना जिब्बी जिब्बी टाउन. जिब्बी टाउन में Hello, welcome, namaste, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to yet another episode of Himachal Travel Series. face down, unsure. लोग भी अच्छे हैं, लोकल लोग भी अच्छे लोग हैं. अच्छे हैं। जो आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं। ये भी बात है. Heart and feeling the same. The distance between us won't get in between us, and no tone of हिमाचल में ट्रैवल करना बहुत ही अमेजिंग रहता है. finding our way back home. और इसी अमेजिंग जर्नी को आगे बढ़ाता हुआ मैं आ गया हूँ जीवी वैली में. Head down, कहाँ घुस के बैठे हो? ओ भाई साहब, कहाँ घुस के बैठे हो आप? कहाँ घुस के बैठे हो? भौंक रहे हो आप? कहाँ घुस के बैठे हो आप? हैं? भौंक रहे हो? या उसमें से नीचे कहाँ घुस के बैठे हो? और वो कहाँ है? दूसरी मैडम, वो भी आ रही है. आज दोनों बाहर आओ, दोनों बाहर आओ. हाँ, अंदर खेल रहे हो, बाहर आओ दोनों. pouring down those hearts. Open हाँ, शाबाश, गुड बॉय. लड़ो मत. the distance between हेलो बच्चों, आपका नाम क्या है? मयंक. आपका नाम क्या है? माधुरी. आपका नाम क्या है? राजवीर ठाकुर। राजीव ठाकुर. आप सब दिल्ली में ही रहते हो? आप स्कूल जाते हो? it all you know. The distance between us. आज स्कूल क्यों नहीं गए? छुट्टी है आज छुट्टी है. आज की छुट्टी है भाई. आज की नहीं लंबी। मेरा तो यही सही पर है। स्कूल कहाँ पर है? ये डॉग कैसे हैं दोनों? अच्छे हैं पपी है? खेलते हैं आपके साथ? ये भाग रहे मारे पीछे। भाग रहे हैं। भाग रहे हैं. हाँ, छोटे बच्चे हैं ना, आप भी तो छोटे बच्चे हो. ये भी भागते रहते, खेलते हैं ये भी. जीवी है एक छोटा सा प्यारा सा गांव और लोकेटेड है कुल्लू वैली में. Don't stop reaching. Don't stop. नदी किनारे बसा ये गांव फेमस है अपने अच्छे होम स्टेज के लिए, कैंपिंग साइट के लिए और जलोड़ी पास के लिए. Don't stop. Never be safe. Don't stop. Never be safe. ये जलोड़ी पास एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे घूमने के लिए. और लगभग डिस्टेंस है उसका 10 किलोमीटर का. Days and the nights spent, hear the breath bleeds the heart. One breath and it's over. और वहाँ से हम कर सकते हैं एक ट्रैक जिसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है. अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं. सिरोलसन लेक का वीडियो है, वो बहुत ही शानदार लोकेशन, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो और बिल्कुल पैराडाइज लगता है. The distance between us won't get in between us, and no torn apart we know. Left in the silence, how lonely the night gets, and through it all you know. The distance between us won't get in between us, and no torn apart we know. Left in the silence, how lonely the night gets, and through it all you know. The distance between us won't get in between us, and no torn apart we know. Left in the silence, how lonely the night gets, and through it all you know.
The distance between us won't get in between us, and no torn apart, you know. Left in the silence, how lonely the night gets. Hold on through it all, you know. Finding our way back बहुत से गेस्ट हाउसेज और होम स्टेज जिनकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है अराउंड 500 इंडियन रुपीज़ से, और मैक्सिमम अगर आप लग्जरी में जाना चाहो तो 5000 या 10,000 तक का भी अवेलेबल रहता है यहाँ पे रूम। और यहाँ पे एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप रहना चाहो ट्री हाउस में तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं ट्री हाउस में रुकने का। एक नाइट मैंने भी ट्री हाउस में स्टे किया था, आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा था। days and the nights spent. Hear the birds, please the home. One breath and it's over. Life on the line says, oh, never the same at all. Finding our way back home. Oh, never the same at all. Finding our way back home. Finding our way back home. Every breath holds a moment, everyone a chance to take. You can see it if you close your eyes. We already know the way. Forever you and me, running wild and free, chasing down the sun. Oh, we've just begun. It's a winding road of all the places we will go. There's a stirring in the ocean. There's a rhythm in the waves. It's a calling deep within your bones, and it cannot be contained. अपने 2 दिन के टूर में जीबी में मैंने स्टे किया। पहले दिन रियो पैराडाइज जो कि एक बहुत ही अच्छा होम स्टे था, तो वहाँ के मैनेजर रितिम ठाकुर, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, हमें बहुत चीज़ों के बारे में भी बताया। और सेकंड नाइट मुझे मौका मिला स्टे करने का एक ट्री हाउस में, ये था ग्रीन अल्पाइन ट्री हाउस एंड रिजॉर्ट। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक टोटली अमेजिंग फीलिंग थी एक ट्री हाउस में रहना। गांव के बीचों बीच बहती है एक बहुत ही प्यारी नदी। और इसके आसपास है सब एप्पल के सब बाग वगैरह, और बहुत ही सुंदर जगह है ये। मस्त कम जगह है ये।
Thank you guys for watching this video. If you really like this video and looking forward to more of them, then please hit the like button and do subscribe my channel. You can also follow me on Instagram with the link in the description. Don't forget to press the bell icon.